Zomato was trying to like improve the average order value for the order, reduce cost of the order, and get more customers. Like I think it's been 10 years. They have run all kind of experiments. What can potentially happen in this space? Like if you see recently intercity legends, right? Order from different city, which I think social media पे काफी प्यार मिला उसको, काफी वायरलिटी क्रिएट करी है, राइट? सो ये जो एक ऐसा कैटेगरी है कि आप बाहर से ऑर्डर करो, तो इसी तरीके से हम लोग और भी दूसरे दूसरे कैटेगरीज पे भी काम कर रहे हैं. राइट नाउ आई एम वर्किंग विच इज फोकस टुवर्ड्स स्टूडेंट्स. Hi everyone, this is your host Himanshu, and today we have Mr. Pratik Jain, who is a senior product manager at Zomato and looking after Zomato Pro Plus. In today's episode, you will get to know how a non-tech, non-MBA background guy cracked a product management job and eventually elevated himself to work at one of the best product companies in the country. So yes, let's welcome Pratik to the show. Welcome to the show, Pratik. Thank you, Himanshu. Thank you for inviting me. I think we have not worked together, but we have been very good friends and in touch even after leaving Ola. So very excited to be on your show and yeah, looking forward to the interview. Pleasure is all mine. And I want to start this conversation by addressing an elephant in the room, that how you, being a non tech, having a master's in finance but not an MBA, got a job in product management. Like, please enlighten us with your journey. So basically, when I started my journey, तब मैंने फाइनेंस से स्टार्ट किया पढ़ाई. फाइनेंस में आप जब स्टार्ट करते हो तो बेसिकली व्हेन यू डू रिसर्च, व्हेन यू लुक कि आपको आगे क्या करनी है, तो आप फाइनेंस फील्ड्स में देखते हो, राइट? और व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, दैट टाइम प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन वाज नॉट अवेलेबल टू वर्क ऑन और वेरी हाईलाइटेड, राइट? सो उस टाइम पे पता नहीं था कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट बोल के कोई चीज भी होता है कि नहीं होता है. आई एस्पायर्ड टू बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. मुझे वो प्रोफेशन काफी अच्छी लगती थी और पसंद आती थी जब मैं फाइनेंस कर रहा था, एंड मुझे वो बनना था. तो मैंने उसके लिए फाइनेंस चूज किया. मैंने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि उस इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए क्या करना पड़ता है. तो मैंने सीएस किया, मैंने मास्टर्स इन फाइनेंस किया, जो बेसिकली मुझे हेल्प किया कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर के पाथ को ले सकूं. बट बहुत जगह क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर इज अगेन अ वेरी कोवेटेड जॉब. बट व्हाट एवर हैपेंड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पाथ में चूज नहीं कर पाया. और मुझे फाइनेंस में अकाउंटिंग वाले फील्ड में कभी इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने टैक्स में 1 साल काम किया, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि चलो टैक्स को करते हैं. देन आई जॉइंड अ कंपनी इन बैंगलोर, फ्रॉम वेयर आई बेसिकली स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्रोडक्ट. तो उस टाइम पे भी मेरा डेजिग्नेशन प्रोडक्ट मैनेजर नहीं था, बट जो मेरा केआरए था उस पर मैंने फर्स्ट टाइम वहां पे एक प्रोडक्ट में काम किया. तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट. बट वो भी फुल फ्लेजर नहीं था बिकॉज मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस था. मैं भी वो ज्वाइन किया था फाइनेंस टीम में ही, बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स टीम में. एंड माय सेकंड कंपनी व्हेन आई वेंट देयर, वहां पे आई एक्सटेंसिवली वर्क इन प्रोडक्ट. तो आई वुड से कि जो मुझे फाइनेंस बैकग्राउंड से और नॉन टेक बैकग्राउंड से प्रोडक्ट में मिला, आई वुड टेल कि ये ऑब्वियसली मेरी इंटरेस्ट भी है मुझे प्रोडक्ट में. तो इंटरेस्ट की वजह से मैंने अपने बॉस को भी काफी पुश किया इन माय सेकंड कंपनी की प्लीज लेट मी डू प्रोडक्ट. आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ. मैंने मेहनत करी. मैंने ज्वाइन करा था बिजनेस फाइनेंस टीम में, और उसके साथ मेरा और एक क्या था, उनका कुछ प्रोसेस ऑटोमेट करना. वो मैंने जब ऑटोमेट करने में काम किया तो आई वर्कड विथ पीएम्स, आई वर्कड विथ इंजीनियरिंग टीम्स. तब मुझे उनके मेथड समझ में, वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं, तब मुझे उसमें इंटरेस्ट आया. मैंने पढ़ाई की कि अगर मुझे ये बनना है तो what to do, what not to do, because I had interest in that field. For me, the journey from finance and non-tech background to product was basically, I would say, my interest, my perseverance, plus the timing. अगर वो टाइमिंग में मुझे वो कंपनी में, अगर मैं बोलूं कि अगर वो जॉब नहीं होता तो मैं शायद आज प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैनेजर नहीं होता. सिंस वो टाइम पे वो अवेलेबल था, तो इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम प्लस माई इंटरेस्ट प्लस माई परसिवियरेंस कि मैं अपने बॉस को कन्विंस कर पाऊं कि हाँ, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस. Combination of these three things work for you. आई हैड द इंटरेस्ट टू डू इट. अगर वो इंटरेस्ट नहीं होता तो आई वुड नॉट हैव लर्नड इट. क्यूरियोसिटी, राइट? क्यूरियोसिटी आई हैव दिस इन मी सिंस माय चाइल्डहुड. आई वुड से कि मुझे क्वेश्चंस पूछना काफी, आई वुड नॉट से अच्छा लगता है, बट हाँ, माय हैबिट इज दैट आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. So that also has helped me in choosing product manager as a career path. Yeah, obviously,
I also feel that I call myself a very curious kid. And why curious? Because curious में ही क्यों आता है ना, कि हर चीज क्यों, ऐसा ही क्यों. सो आई थिंक दैट्स वेरी नेचुरल टू मी ऑल्सो. और मैं हमेशा यही कर रहा होता हूँ कि ऐसा ही क्यों हो रहा है ये चीज. तो ये जानना है मुझे, हर चीज जानना है कि ऐसा क्यों होता है. एंड इवेंचुअली आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर, कि हम जितना क्यूरियस होंगे उतना जल्दी हमें ज्यादा नई चीजों के बारे में, मार्केट्स के बारे में, काम के बारे में, एरियाज के बारे में समझ में आएगा ना. हम कस्टमर के साथ भी बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम क्यों है, या ये बिजनेस करेक्ट। ऐसे ही क्यों करना चाह रहा है, कि और क्या तरीके हैं. वी कैन चैलेंज द स्टेटस को बाय दैट ओनली. आई थिंक वेरी फेयर. हाउ दिस फिनेंस नॉलेज actually helps you in your day-to-day job today? फाइनेंस में काफी सारे फील्ड्स होते हैं, राइट? देयर आर अकाउंटिंग, देयर आर ऑडिट, देयर आर टैक्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बट जो मेरा इंटरेस्ट था फाइनेंस में भी, दैट वाज मोर टुवर्ड्स बैंकिंग एंड टैक्स। Correct. टैक्स में व्हेन आई डिड टैक्स, तो टैक्स बेसिकली द रोल वाज असेसमेंट एंड स्क्रूटिनी। उसके लिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, यू हैव टू मेक डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट बिफोर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, आईटीटी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मुझे उसमें भी इंटरेस्ट था। सो दैट क्यूरियोसिटी की पढ़ो, अपना ड्राफ्ट बनाओ, अपना नोट्स बनाओ एंड प्रेजेंट करो, प्लस रिसर्च इज अ वेरी कोर पार्ट ऑफ असेसमेंट, बिकॉज यू हैव टू रीड लॉट ऑफ केस स्टडीज एंड देन पिक पॉइंट्स एंड पुट इट हियर। तो रिसर्च भी मेरे में करने की उस टाइम पे काफी उत्सुकता थी, इच्छा थी। तो उसमें जब हुआ तो उसका मेरा एक बेस बना कि चलो, आई एम गुड एट रिसर्चिंग, आई एम गुड एट reading, I am good at presenting, and since I had appeared before commissioners, so I knew how to talk to people and communicate stakeholders different, because you have to talk to your senior leadership team in the company, if there is any tax matter going on, then your own boss, then income tax department, so plus your other team members. So communication was anyways very important part in my professional journey. Being from finance background, data is also important, right? I mean, I've worked in data, and that has given me the base of data analysis, which is a very important skill for a product manager. So I would say फाइनेंस ने मुझे जो दिया है, एक डेटा रीडिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी दी है, एंड उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, और प्लस बाकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो भी मुझे मेरे मास्टर्स इन फाइनेंस ने और कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड सी एस ने दी है टू बिकम अ गुड प्रोडक्ट मैनेजर. सो आई थिंक ऑल्दो आई हैड टू लर्न इंजीनियरिंग स्किल्स अ बिट, बट फाइनेंस ने मुझे वो बेस दे दिया है कि चलो, मुझे कुछ स्किल्स में आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड बाकी स्किल्स आई एम लर्निंग. I think you are very comfortable with numbers after having a background in finance, which eventually help you to become a great product manager. And I think it's very crucial looking at data, analyzing the right areas to invest your time and resources, very important. Along with that, you're also comfortable, as you mentioned, in research. It's a great skill. Research is something which is truly an amazing, underrated skill. Once you have a great researching skill, obviously analyzing your competitors and doing a market research puts you ahead of many folks. So I completely agree to that. आप कुछ क्यूरोसिटी का बता रहे थे, एग्जाम्पल का, वो बताओ. Yeah. So for product manager, curiosity is very important. Asking right questions, not only questions कि आपको क्या questions पूछने हैं, that is also very important, and you will learn that जब आप काम करते हो, right? जब practice करते हो, काम करते हो, तभी आपको skills आती है कि questions, right questions क्या है. When I started my journey, तो मैं CA भी कर रहा था, तो CA में आर्टिकलशिप होती है जो आपको करनी पड़ती है 3 साढ़े 3 साल की. तो उसमें मैं ऑडिट करता, इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट, और उसके अलावा मैंने टैक्स ऑडिट भी किया है, आरओसी की काम भी किया है. तो ऑडिट में क्या फायदा होता है, यू गेट टू वर्क इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, एंड आपको बिजनेस के होलिस्टिक व्यू मिलता है कि बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एक्सेट्रा. तो जब मुझे याद है एक इंसिडेंट, एक कंपनी रादर, कि जब मैं वहां जाता था ऑडिट करने के लिए, तो जब भी मतलब डिस्कशंस होते थे वीकली, ट्वाइस और थ्राइस, तो हेड ऑफ अकाउंटेंट आता था और उसके 2 टीम मेंबर्स आते थे, और हम लोग 3 4 ऑडिटर्स होते थे. तो पहले 1 2 महीने तो ऑब्वियसली वर्क डिस्कशन हुआ कि ये सब काम आया. लेकिन फिर मैंने क्या किया, जो हेड ऑफ अकाउंट्स था उसको मैंने अप्रोच किया, एंड आई आस्क्ड हिम, सी, ऑडिट के क्वेश्चन तो हम लोग करते हैं, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन गिव मी 15 मिनट्स, ताकि मैं बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी आपसे ले लूं.
जब भी हम लोग लेट्स से कनेक्ट करते हैं फॉर वर्क डिस्कशन, उसके बाद 15 मिनट बिटवीन यू एंड मी वन ऑन वन, आई विल हैव क्वेश्चंस जो मेरे को डाउट्स हैं वो मैं पूछूंगा। तो वहां से मेरे आई वुड से क्वेश्चंस पूछने की एबिलिटी एंड स्किल्स डेवलप हुई एंड क्यूरियोसिटी डेवलप हुई कि मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि बिजनेस जो काम करता है, सपोज कोई रियल एस्टेट डेवलपर है, कोई जूट के इंडस्ट्री में है, कोई टी गार्डन इंडस्ट्री में, कोई होटल इंडस्ट्री में, तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज काम कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या एंट्री बैरियर्स आते हैं, क्या क्या होते हैं। तो वो क्यूरियोसिटी में उस टाइम से ही थी। उस टाइम से ही मैं लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया कि कैसे कैसे होते हैं, उनसे टाइम लेके, उनसे टाइम सेट करके, एंड दैट हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस होलिस्टिकली। एंड मुझे काफी होलिस्टिक व्यू के साथ वो भी मिला कि राइट क्वेश्चंस क्या, बिकॉज आप पहले क्वेश्चन पूछते हो तो आप कुछ भी पूछ लेते हो कि ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, बट व्हेन यू गेट द फीडबैक कि ये ऐसे होता है, देन यू डेवलप योर माइंड कि हाँ चलो मुझे ये क्वेश्चन पूछना तो ये आंसर मिलेगा। मुझे है ना हमेशा से ऐसा होता था कि मैं जैसे काम करता हूँ, तो जैसे आपने बोला कि आप उसको मीटिंग के बाद 15 मिनट अलग क्वेश्चंस पूछते थे। मेरा ऐसे होता है कि अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ और हमारे काम की बात हो गई है, तो मैं आई ऑब्वियसली आस्क, ऑलवेज आस्क देम और क्या चल रहा है, कि और हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारे और क्या प्लान्स है, हमने ऐसे ही क्यों किया है ये पुराने वाली चीज को। दूसरी कोई चीज मैंने उनकी देखी होगी तो आई स्टार्ट कीप आई बेसिकली कीप आस्किंग देम अबाउट दैट थिंग। It gives me a so much more context. It helps me to build better relationships. It helps me to करेक्ट। give more knowledge, things which I was not knowing otherwise. So, what are you doing every day to become 1% better PM? To become 1% better PM every day, I think, Himanshu, I follow you. I read your LinkedIn post every day. And usme the questions that you ask obviously helps me analyzing that. So you are my source of becoming 1% better every day. But with that also, how to improve yourself. Agar 1% you have to become a great or good product manager. तो ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कैसे उस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करते हो, तो उसके लिए आई मेक श्योर कि नॉट एवरी डे तो इज नॉट पॉसिबल, बट आई रीड मीडियम आर्टिकल्स मे बी थ्राइस और 4 टाइम्स अ वीक, न्यू न्यू टॉपिक्स की व्हाट इज ट्रेंडिंग, नए डेवलपमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट में क्या आ रहे हैं, कंपनीज कैसे काम करें, नए नए टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ रहा है, and I make a note of that in my Notion notebook, and that also helps me in my interviews also, कि वो नोटबुक बना लेना, तो दैट आई मेक श्योर कि मैं उसको लिखूं। तो यही मैं करता हूँ जितना ट्राई कर सकूं कि रीड समथिंग, सम आर्टिकल्स रिलेटेड टू बिजनेस एंड मेक अ नोट ऑफ इट टू लर्न न्यू थिंग्स। Same pinch on Medium. I read a Medium a lot, and my lot of inspiration for my content also comes from the various different thought leaders, that how they are thinking about it, and then I cross question myself that how I'm thinking about it. But thanks for mentioning me. You have a great LinkedIn profile, you post great content, and that this is honest. Tell me how your day looks like at Zomato. फॉर अ पीएम, फॉर अ प्रोडक्ट रोल, आई थिंक ऐसा कोई दिन होता नहीं है कि आप एक दिन और दूसरा दिन सेम होता है, राइट? एंड एवरी डे इज डिफरेंट, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर वर्किंग ऑन एट दैट मोमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके दिन चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोडक्ट आइडिएशन पे काम कर रहे हो तो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग, नए आइडियाज कैसे आपको उसको बनाना है, क्या है, उस पर जाएगा। फिर आप अगर लेट्स से आइडिएशन के बाद आप अगर उसके डेफिनेशन में जाते हो कि आपको डिफाइन करना है कि क्या होगा, एमवीपी बनानी है, तो पीआरडी लिखने में, डिजाइन के साथ बैठने में, फिर डिजाइन बनाने में, प्लस इंजीनियरिंग से डिस्कशन में, देन आता है एग्जीक्यूशन पार्ट। तो एग्जीक्यूशन पार्ट में आपका डिस्कशन विद इंजीनियर टीम्स, व्हाट आर देयर रोड ब्लॉक्स, व्हाट आर देयर प्रॉब्लम एरियाज, उसको सॉल्व करने में जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइम आपका डिफरेंट डिफरेंट डेज होता है। बट अगर मैं जनरली बात करूं कि प्रोडक्ट मैनेजर के लाइफ में या मेरे लाइफ में अगर मैं बोलूं, लेट्स से मैं एग्जीक्यूशन स्टेज में, आई ट्राई टू कंप्लीट माय स्टैंड अप्स, जो मेरी इंजीनियरिंग की स्टैंड अप्स होती है, बाय फर्स्ट हाफ व्हेन आई से बेसिकली बाय 12:31 के अंदर जितने भी टीम से मुझे स्टैंड अप करनी है मैं वो कर लेता हूँ। बिफोर दैट मैं मॉर्निंग में सबसे पहले जाते ही चेक करता हूँ कि मेरे जो भी मीटिंग्स है ड्यूरिंग द डे उसमें मेरी कोई पेंडेंसी है कि नहीं, और उसमें मुझे कुछ काम करना है कि नहीं करना है। ट्राई करता हूँ कि जो मेरा सेकेंड हाफ है, मतलब बिटवीन 2:30 टू 5, 2 to 5 वैसा, आई ट्राई टू ब्लॉक दैट टाइम फॉर माई सेल्फ, राइट? कि उस समय कोई मीटिंग ना लूं, और जो भी मुझे सोलो वर्क करने या पीआरडी लिखनी है, डिजाइन करना है। और मैं एक चीज मेक श्योर करता हूँ कि इवनिंग स्नैक्स, इवनिंग टी, आई टॉक टू पीपल
फॉर 30 मिनट्स चाय पे चर्चा जिसको बोलते हैं। उससे क्या होता है कि दूसरे टीम मेंबर्स क्या काम कर रहे हैं, उन लोग का क्या प्रोग्रेस है, उस क्या क्या आइडियाज पे उन लोग काम कर रहे हैं उनके स्किल्स में, तो दैट हेल्प्स अ लॉट बिकॉज कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बिल्डिंग एक स्किल भी होती है इसमें, राइट। और फिर मीटिंग्स, जनरली मीटिंग्स चलती है। एंड एज आई मेंशन पहले भी कि एक लास्ट के वर्क डे या उसमें मैं हाफ एन आवर सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए ब्लॉक रखता हूँ, जिसमें मैंने उस दिन क्या काम किया, उसका क्या आउटपुट आया और वर्सेस नेक्स्ट डे क्या करना है, उस टाइम में उसको क्लोज करता हूँ। And quite exciting actually. That is a reason why people love product management as a role, because it's not monotonous on a daily basis. It varies on a everyday basis. One day you're working with engineers on executing something, you're releasing something. Other day you are on a completely planning phase and thinking about product strategy. Someday you are Right. only working with design and your mind is entirely on key how to make a good design. Someday you're only doing research with your customers. It's completely like drastically different on a daily basis. Everything. Correct, correct. Because we are talking about product management, what is your definition of a product management? So product management is different for different organizations, what I feel, and depending on the roles and depending on the KRAs, different companies expect their PMs to drive different KRAs, right? तो कहीं पे business involve होती है, कहीं पे सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप करना होता है, कहीं पे बिजनेस और प्रोडक्ट दोनों करना होता है। सो काफी वेरिड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट आई कैन गिव, बट अगर मैं समरी बोलूं कि व्हाट इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड व्हाट आई लर्नड इन माय एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 8 years. So I feel product management is something which helps you guide how the business will run, and it becomes an enabler for the growth of the business. It's a step-by-step guide to develop a product and thinking from customers perspective and customer first approach. ये customers को क्या चाहिए, उसके लिए क्या important है, क्या दिखाना है, and having customer first mindset and building great products is what I feel product management is. Okay. Okay. Noted, sir. I think you have worked at one of the very good companies in the country. You have got the basics sorted of product management. What do you want to learn next? Which direction you want to improve yourself? Leadership. Leadership, matlab, what do you mean by leadership skills? How to influence without actually doing something. When I say influencing people without doing anything, like PM में क्या होता है, आप PRT बनाते हो, सब बनाते हो, सब करते हो, right? But let's say when you become a leader, you think broad, visionary, ज्यादा बड़ा चीज सोचते हो, बट एक्चुअली में उस पर काम नहीं करते कुछ। आपके अंडर लोग काम करते हैं, आपके अंडर लोग PRD बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, बट आप सबको देखते हो एंड आप उनको बताते हो कि किसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, किसमें इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, राइट? तो मुझे अब मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपना फोकस ज्यादा जूम आउट करके ब्रॉड व्यू लूँ एंड स्मॉल स्मॉल टास्क में असाइन करूँ लोगों को। सो दैट वाज आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन, बिकॉज मैंने क्या किया, अगर कोई चीज मेरा ऐसा होता है कि अगर कोई चीज मेरे पास अच्छे से नहीं आता, मैं उस पर खुद से काम करने लग जाता हूँ, उससे मेरा टाइम वेस्ट होता है दूसरे वाले को मैं कुछ नहीं दे पाता। तो मैं वो करके उसको कैसे ज्यादा अच्छे से बताना चाहिए कि गिविंग गुड फीडबैक। It is superpower of anyone, actually, not only of product manager, but anyone, that how you are giving a feedback which moves the other person in a positive direction. What is your advice to young PMs on cracking a PM role? So for aspiring PMs, my advice would be ki, I think product management is not a job where you have set of criteria कि मुझे ये सब करने से ही मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूंगा या मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। So when let's say you are aspiring PM, you don't have any experience or you are early in your career, let's say 0 to 3 years of experience, तब अगर आप you want to switch your career, I mean switch मतलब switch industry or move upwards, तो the skills that I would obviously talk about is how to write good PRDs, डेटा एक्सिक्यूशन, डेटा एनालिसिस, डिजाइन, कस्टमर फर्स्ट अप्रोच, ये सब तो होनी चाहिए जो एक बेसिक प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट मैनेजर की ट्रेट्स होती हैं कि क्या आपको ये सब आनी ही चाहिए। दिस इज नॉट नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल, राइट? बट हैविंग सेड दैट, आपको इंटरव्यूज भी क्रैक करने हैं एंड फॉर क्रैकिंग इंटरव्यूज यू हैव टू प्रेप. So that is one thing. When I talk to people, right, I am also right now mentoring in different platforms.
So when I talk to people, when they come and talk to me about how to crack interviews, how to land into this job, so when I talk to them, I ask them that why do you want to become product manager? So उनका जो आंसर्स मुझे मिलते हैं कि बिकॉज मुझे अपने काम में मजा नहीं आ रहा, इसलिए मुझे प्रोडक्ट मैनेजर बनना है. सो आई टेल देम कि आपको अगर ये प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड लर्न. सो वेर एवर यूर अप्लाइंग, लर्न अबाउट दैट इंडस्ट्री, लर्न अबाउट दैट कंपनी, लर्न अबाउट देयर कॉम्पिटिटर्स, and prepare for the interview. And how to prepare for the interview? Obviously, practice, prep and prep. And if you have some friends who are there, who's willing to help you, set up sessions with them, talk to them, do mock interviews, watch videos. This will definitely help you in cracking roles, and obviously build your skills. So let's say you're applying for a company which is into one sector and has a specific requirement, and if you have that requirement, so that is good. If you don't, then you have to build that requirement as well. So keeping the important skills in mind ki jo basic skills hain, these are very important skills which I've mentioned for any new or young PMs to either grow or cracking PM roles. Got it. Got it. Advice noted. I want to talk about your work at Zomato. I think I am very curious to learn about how Zomato functions. Zomato was always the first one to adopt those new features which Google was launching, and I always feel that how come Zomato is the first one to do it, but they were ahead of time. They were the first ones to experiment with the new products, and I feel that DNA is very different. What that DNA is in real, there is a Googliness for Google, there is a Zomatiness or something which is with the Zomato. What is that Zomatiness? If I have to talk about this in one line, is obviously talent and people, right? The way they hire is, I think, where their motives. If you see Zomato, generally they don't have any job listing anywhere. They generally have referrals. Hiring is one thing which I feel, according to me, helps them a lot, because they only hire very good talents, and the people who work at Zomato is very attached to the company. They think that this is my company and I want to work for this. And जो भी सीनियर लीडरशिप में काम किया है, टू बिल्ड दिस इन एम्प्लॉइज, टू बिल्ड दिस माइंडसेट कि मेरे को ओनरशिप माइंडसेट से काम करना है, मेरे में हसल होने चाहिए. इवन इफ इट इज लिस्टेड कंपनी, इट्स हसल कल्चर है. लोगों को लगता नहीं है कि वो किसी और कंपनी के लिए काम करे, किसी और के लिए काम करने कर रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं. एंड ये दिस इज पॉसिबल बिकॉज यू आर गिवन फ्रीडम टू वर्क. प्लस जो इनका टैट है टू डिलीवर प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी लो. मतलब ऐसा नहीं कि कोई 15 दिन का स्प्रिंट चलेंगे, 30 दिन का स्प्रिंट चलेंगे. ये 7 डेज में भी प्रोडक्ट निकालते हैं. और ये ओनरशिप माइंडसेट से आता है, क्योंकि आप अगर किसी से काम करना चाहते हो 7 दिन में प्रोडक्ट निकालने के लिए, ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा एफर्ट लगेगा उसको डेवलप करने में. तो एवरीबडी कम्स टुगेदर, इंजीनियरिंग टीम, मार्केटिंग टीम, ऑपरेशंस टीम, फाइनेंस टीम, जितने भी टीम्स इन्वॉल्व हैं, और सबको ऐसा नहीं कि मुझे जल्दी जाना है, जल्दी करना है. दे वर्क टुगेदर, दे रिलीज द प्रोडक्ट, एंड इफ इट इज नीडेड वर्क लेट नाइट. कोई कंप्लेन नहीं, सुबह जल्दी आ जाते हैं. सो ये जो कल्चर है, आई थिंक कल्चर प्लस टैलेंट इज द रीजन बिहाइंड सक्सेस. I agree that with the ownership, अगर आप ज्यादा काम करते हो, आप लेट जाते हो, आप जल्दी आते हो, आप सारी चीजें. But do you think this hustle culture is good in the long run for any company? It depends. हर एक कंपनी का अलग अलग स्टेजेस एंड ग्रोथ स्टेज आते हैं. तो फर्स्ट 0 to 5 years आप समझते हो कैसे करना है, क्या करना है. नेक्स्ट 5 years आप ग्रोथ स्टेज पे हो, तो आपको बहुत ज्यादा काम करना होता है. एंड 10 to 15 years या उसके बियॉन्ड आप प्रोसेसेस बनाते हो, डेवलप करते हो. तो हसल कल्चर क्या होता है? हसल कल्चर आपको हेल्प करता है इन दोज फर्स्ट 10 years, जब आप या तो नया स्टार्ट कर रहे हो या फिर ग्रोथ स्टेज पे हो, राइट. हैविंग सेड दैट, 10 साल के बाद भी आपको अगर हसल कल्चर पूरा आप एलिमेंट कर जाते हो, आई वुड बिलीव कि वो
ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए कंपनी के लिए, क्योंकि हसल का चुनाव इम्पोर्टेंट है अगर आपको कोई भी चीजें फास्ट डिलीवर करनी है इन दिस इंटरनेट स्पेस, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है स्पेस में। अगर आप हसल कल्चर नहीं रखोगे तो कंपटीशन आपसे आगे निकल जाएगी, क्योंकि उनके पास नए टैलेंट वो ऐसा हायर कर रहे हैं। तो आई फील कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हसल एज वेल प्रोसेस ड्रिवन वर्क इज इम्पोर्टेंट फॉर कंपनी लाइक जोमेटो, राइट? You said that product managers at Zomato handle P&L. And obviously, I completely agree to this fact that almost everyone loves Zomato as a product, though there is a binary following between Zomato and Swiggy. As a lovers, they are like hardcore lovers. But I being a big fan of Zomato product, I want to know this innovation is good, this customer experience is great, but what is the path to profitability for this company? Path to profitability is definitely the focus of Zomato, and they want to become profitable. They want to give return to their shareholders, and I think Pinder has mentioned in multiple meetings or multiple calls with investors that this is what they're chasing, and उन्होंने आई थिंक टारगेट भी सेट किया हुआ है कि बाय सिंस नाउ ब्लिंकिट इज आल्सो इंटीग्रेटेड कि by next 5 years 2027 they will become profitable. So for that they are taking multiple initiatives to become profitable, so improving efficiency of riders, reducing costs, growing number of orders and reducing cost per order. सो ये जो चार चीजें हैं, इसके लिए प्रोडक्ट में भी काफी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, बिजनेस साइड से भी काफी इनिशिएटिव्स ले जा रहे हैं. इफ आई टॉक अबाउट प्रोडक्ट इनिशिएटिव्स दैट वी आर टेकिंग, वी आर कमिंग ऑफ न्यू आइडियाज ऑन how to target new customers, what are we talk to customers regularly, we get their feedback to what they want, and launch new categories, redesign some features on the app so that it becomes easier for customers to order faster, right? And give a good user experience. So retention is very important. तो retention के लिए क्या क्या करना चाहिए, and उससे कैसे profitability है, कि उससे कैसे cost per reduce होगा, giving offers, giving new benefits, launching new products is what the KRA or KPI, I think, product and everybody and different product teams are driving for their respective products. You also mentioned about this that they're trying to like improve the average order value for the order, reduce cost of the order, and get more customers. Like I think it's been 10 years. They have run all kind of experiments. What can potentially happen in this space? So in every sector there are mainly two players, और वो basically हर इंडस्ट्री के साथ अगर आप पहुंच जाते हो, पेनिट्रेट हो जाते हो, तो मार्केट में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है, राइट? बट जो जोमेटो और स्विगी केस में है, दे बेसिकली हैव द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो स्टिल इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग न्यू मार्केट्स, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स. और अभी काफी सारे कैटेगरीज ऐसे हैं जो हम लोग इंटरनली भी डिस्कस करते हैं कि जो अभी तक हमने लॉन्च ही नहीं करे, फोकस ही नहीं करे, हम लोग अभी अपने कोर बिजनेस पे फोकस करके उसको ग्रो कर रहे हैं. लाइक इफ यू सी रिसेंटली इंटरसिटी लेजेंड्स, राइट, ऑर्डर फ्रॉम डिफरेंट सिटी, विच आई थिंक सोशल मीडिया पे काफी प्यार मिला उसको, काफी वायरलिटी क्रिएट करी है, राइट? सो ये जो एक ऐसा कैटेगरी है कि आप बाहर से ऑर्डर करो, तो इसी तरीके से हम लोग और भी दूसरे कैटेगरीज पे भी काम कर रहे हैं जो हमको लगता है पोटेंशियल देगी in the long term. हो सकता है फेल हो जाए, but it always about reiterating, learn and reiterate. I agree. And experimentation is the only way to figure it out. The validation is a myth. You only can guess, but till the time the real product or real service is not out there, you do not get a real feedback as well. I'm sure you must have heard that Zomato was supposed to launch a 10-minute food delivery, and they were trying to build a prediction engine that in which area how many orders can come and try to get the food nearby so that they can deliver instantly. What is up to with that thing? Do you think it's going to happen? So if it is going to happen, yes, it is already there. The team who is driving it, they are doing it. It's in pilot mode yet. They are trying to first figure out and make the processes around it, how this model will work. And it's operational in Gurgaon, some parts of Gurgaon, and some parts in Bangalore as well, where you stay. But whether this will work or not is a long-term answer, because the offering is just that we'll deliver faster, right? The food will be same, the source of the food will be same. So the team is trying to
I think create processes around it, and when they think it should be scalable, they will scale it. Right now, as far as my understanding and my knowledge, business is doing decently well. No, I think good experiments, intercity legends as well as this one. You said that getting into Zomato is not straightforward. They do not have a listing page where they have open roles and everything. Tell me about how was the interview process like overall? Zomato का स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ, सो फॉर मी व्हेन आई वाज लाइक लुकिंग आउट, जब मैं ओला में था तब मैं, जोमेटो वाज एनीवेज वन ऑफ माय ड्रीम कंपनीज टू वर्क, बट यहाँ पे कोई ओपनिंग होती नहीं थी तो मैं खो जाता, बट मुझे कोई ओपनिंग दिखी नहीं. बट सडनली वन डे आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई थिंक HR रीच्ड आउट टू मी ऑन लिंक्डइन एंड बोला कि वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी, आर यू इंटरेस्टेड. एंड सिंस आई वाज लुकिंग आउट, आई वाज वेरी प्रॉम्प्ट कि मैंने रिस्पॉन्स कर दिया, या आई एम इंटरेस्टेड, लेट्स डिस्कस. तो फिर हमारे इंटरव्यू शेड्यूल हुए. सो बेसिकली माय फर्स्ट इंटरव्यू वाज विद माय हायरिंग मैनेजर, जो मेरे को हायर करा था. एंड जनरली उल्टा होता है, बाकी कंपनीज में एंड पे होता है, यहाँ पे ये पहले था. तो वो डिस्कशन में प्रोडक्ट सेंसेस किया, कम्युनिकेशन चेक करी, एंड उसने उसको बोल दिया हाँ वी आर गुड टू गो नाउ. उसी टाइम पे मेरे को फीडबैक भी मिल गई कि वी आर गुड टू गो सिंस ही वाज माय हायरिंग मैनेजर, नाउ वी विल टेस्ट यू मोर ऑन प्रोडक्ट एंड डिजाइन, राइट. दैट टाइम व्हेन आई वाज गेटिंग हायर्ड, मेरे स्किल सेट्स और मेरे जो रोल डिफरेंट था फॉर विच आई वाज गेटिंग हायर्ड. एंड मैं जब हायर हो गया तब मुझे कोई और टीम में डाल दिया. बट जो बाकी मेरे नेक्स्ट राउंड्स हुए वो 4-5 राउंड, इट वाज मोर कॉन्वर्सेशनल. कि मैं एक दिन गया, इट वाज ओनली विथ वन पर्सन, बट लेट्स से आई एम टॉकिंग टू यू, राइट. तो मैं एक दिन आपके पास गया एक प्रॉब्लम लेके, उसका सोल्यूशन लेके, यू आस्क क्वेश्चन एंड यू आस्क मी टू कम अप विथ अनदर सोल्यूशन द नेक्स्ट डे. सो इट इज मोर ऑफ अ कन्वर्सेशनल डिस्कशंस, नेक्स्ट 5-6 राउंड्स, एंड लास्ट राउंड HR का हुआ. तो what I was tested on in the second round was mostly problem solving skill and design skills, कि आप design कैसे करते हो. I think in Zomato PMs are also expected to do design. तो उस पे मुझे काफी टेस्ट किया गया. Okay. This is surprising that the PMs have to design. Like, I'm sure it's not again very much heard of in the other companies, but they're expected to design the entire product themselves. But Zomato मतलब has हाँ, a lot of product designers as well. So what do you correct. mean by why they're supposed to know design? Like it's a no, from the knowledge perspective, or they have to design? So designers are there, but the scale that they're working on अभी Zomato as a company, काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, and designers bandwidth is limited, right. तो when you go to designer, वो ऑलरेडी 10 चीजों पे काम कर रहा होता है, और प्रायोरिटाइजेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप उसको नहीं मेरे प्रोडक्ट को डिजाइन कर दो, राइट. एंड अगर आप मेरे प्रोडक्ट को डिजाइन कर दो तो दूसरे प्रोडक्ट भी प्रायोरिटाइज हो जाती है. तो जब भी आप डिजाइनर के पास जाते हो और वो जब इतने सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा होता है, तो आपका ही प्रोडक्ट डिले होता है. एंड अगर आपका ही प्रोडक्ट डिले होता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर रीजन एक्सेप्ट कोडिंग. ऑब्वियसली उसके लिए बेनिफिट मिल जाती है, बट एक्सेप्ट कोडिंग, कोई भी चीजों के लिए डिले हो रहा हो, product managers are responsible. So I think management have understood this, and when they hire, they look for this also. Do you know design as well or not? And if not, you are expected to learn and do it. So अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई important प्रोजेक्ट हो, आपको undivided bandwidth मिल जाएगी. But let's say for small products or small features, you have to do design. And one of the most underrated skills I think which I have learned here is copywriting. That is also expected out of product managers. Okay. Okay. And when you mentioned the 5-6 rounds happened uh, in between with one person where you were supposed to solve one problem and have to present design, can you give more bifurcation of those 5-6 rounds? Yeah. So it happened like this. He gave me one problem and on how to solve merchants ka issue. There was an issue. I don't remember it clearly right now. So let's say if merchants are facing this issue and you are a PM here, how would you solve for it? तो यही प्रॉब्लम था ब्रॉडली. तो मेरे को You सात received this in second round या सेकंड राउंड एंड after your hiring manager interview. You received this problem. करेक्ट. करेक्ट. तो यही प्रॉब्लम था. तो आई वाज गिवन 7 days बिकॉज दिस इंडस्ट्री वाज न्यू टू मी
एंड मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि कैसे ये इंडस्ट्री काम करती है। तो मैंने पहले 1-2 दिन तो रिसर्च में स्पेंड किया, यूट्यूब वीडियोस देख के, पढ़ पढ़ के कि क्या होता है, कैसे काम करती है, क्या इश्यूज फेस करते हैं। देन व्हाट आई डिड इज आई विजिटेड मर्चेंट्स बाय माई सेल्फ, राइट। मतलब मैंने 2 दिन जाके बैंगलोर में डिफरेंट डिफरेंट मर्चेंट्स से मिला कि ऐसे ऐसे आप लोग क्या क्या इश्यूज फेस करते हो, राइट। तो आई गॉट देयर फीडबैक। तो उस फीडबैक के बाद मैंने एक प्रॉपर पीआरडी लिखी कि ये पीआरडी एंड दिस इज हाउ आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस। तब जब मैं नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशंस हो रहे थे, तब ही हैड क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। तो उसके सेकंड जो क्वेश्चंस थे उस पे भी उन्होंने द इंटरव्यू सेट की टेक 2 more days एंड कम अप विद आंसर। तो मैंने और रिसर्च किया, और देन में लोगों से नहीं मिला बट रिसर्च किया और पढ़ा, देन आई केम अप विद answers. Then in the third discussion, what he said, ठीक है चलो, now I agree, we both agree that this is what we are at. Now let's design this. If you have to design this, how will you design this for merchants? तो उस टाइम पे मेरे को डिजाइन एक्सपीरियंस था ओला का एंड कार देखो में थोड़ा बहुत, बट ओला इज मेनली वेयर आई वर्क इन डिजाइन। तो डिजाइन मुझे पहले पूरा पढ़ना पड़ा कि एक्चुअल में फिग्मा कैसे काम करता है। वर्क इन फिग्मा बट इतना मैं एक्सपर्ट नहीं था। तो मैंने पढ़ा, पहले सीखा, मैंने 2-3 डिजाइनर से बात करी कि कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। तो लकीली एक जन ने मुझे थोड़ा थोड़ा हेल्प किया एंड मैं फिर डिजाइन बना के अकॉर्डिंग टू मी कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसका डिजाइन कैसे होना चाहिए और उससे हम लोग क्या वैल्यू देना चाहते हैं और क्या कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, वो बना के मैं गया। तो नेक्स्ट ही सेड कि डिजाइन इज ओके बट आई थिंक यू शुड इम्प्रूव इट। तो उसने फीडबैक एरिया बता दिया और बोला कम अप विद न्यू डिजाइन। तो उसमें उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया ऐसे करके ही मल्टीपल राउंड होते गए। ही यूज्ड टू गिव फीडबैक एंड asked me to change it and I used to go. I think मुझे इसलिए हायर किया गया कि उन्होंने देखा कि मैंने काफी ज्यादा टाइम डाला, इन एफर्ट डाला इन रिसर्चिंग इन एक्चुअली। तो he told me one thing that I like that you actually went to the merchant and spoke and understood their problems, because काफी इंटरव्यू लोग ऐसे करते नहीं है। तो I think that helped me a lot, I believe. Tell me about what are you working on right now? Right now, I'm working in a very a new program and thinking growth from long-term perspective and long-term bet for a program which is focused towards students. Right now, in food space in India, nobody is focusing on students. Like companies like Apple, Amazon, they have this program, but food may nobody's solving this. So this is one of the projects which is mainly long-term bet. I'm working on this. Other than this, I'm working on one of the other projects, which is basically their delivery, long distance delivery. I'm working on that as well. इससे पहले I worked on loyalty program, Pro Plus. I think as you must be aware, अभी उसके onboarding बंद हो चुकी है. They are not onboarding any customers, so they are redesigning it. तो मैंने उस पे brainstorming पे ideation पे काम किया पहले नए loyalty program की. Okay. And obviously, I'm sure you cannot tell us more about that, what you're working on the student. It must be a surprise which you will only hear from Dipinder. Let's have some fun now. It's a rapid fire time. You have to quickly choose everything. Okay. And free fire में will I get anything? You might. Like You coffee never with know. Karan. You never know. This is better than coffee with Karan. It's no gossip. No gossip. Okay. I'll basically tell you one word and you tell me what is the first word which comes to your mind when you hear it. Okay. Customer. God. I think they are the gods. For any business, we should listen to customers. And when I was studying also, and in my finance background, I remember one teacher who always used to say, customers are God. तो जो वो बोलते हैं वो सुन लो, कस्टमर भगवान है। तो आई थिंक वो है मेरे दिमाग में। God wants free deliveries and discounts and everything. तो आई थिंक फ्रॉम देयर कि वो टीचर जो बोलता था कि कस्टमर भगवान है, उससे मेरे दिमाग में वो बैठ गया, कस्टमर इज गॉड। I agree that customer is a super important person. The entire business revolves around him. Talking about the second one is influence. Influence, responsibility.
Data. One word that comes to my mind by data is enabler. Growth. Growth, survival. So choose one. Money, power, fame. Money. Why? Fame, for me, it is not important, and power is definitely important for me, and money is equally important. But I have to prioritize between money and power, then money. Bhavish said, and which stuck to me, money is a tool for creation. And I actually loved it. Like, I completely believe in the fact that if I make some money and my survival is there, I want to just utilize the rest of the money to build something amazing. And Yeah, it's financial independence. You can take decisions. You can correct. take Yeah. decisions. In fact, so money Yes. is important. No, I think you prioritize really well. The hamper is coming closer to you. What's your dream company? One dream company or multiple dream One companies? dream I have company. multiple. One dream company. In India, if you ask me about my dream company, I am working there. That is Zomato. Tell me three companies where you really want to work at globally. Globally, a dream company that I'd love to work. Meta will be one. Google will be second. And third, I think, will be Netflix. You have offer from all of three, and you have to decline one, put on hold one, and accept one. It's very tough because being all of them are my dream companies. It will be very hard for me to decline. But if I have to decline, then I would decline Netflix. I will accept between Meta and Google. Meta, and I will keep on hold Google because I love Instagram, and I spend my not significant time whenever I get some time on Instagram, and I love that product, so I want to work on that. You answered that you want to be at Instagram, but if you have to choose between startup and big tech, once you worked at Instagram, what would be? When you talk about big techs, there are companies like Facebook, Amazon, Google, etc., etc. But if you see within those big tech, also there are startups running, right? If I say Instagram is separate, Facebook is separate, YouTube in Google is separate. So in those small setups, also the culture is like startup culture, right? And since I've worked in mostly startups, I would pick startups because I get to learn a lot in startups. There's a hustle culture, there is a creativity, freedom you can create, you can develop. In big tech, it will be mostly process driven, but I won't mind big tech as well if I get to work in an environment which is like startup. Awesome. अगर पीएम ना होते तो क्या होते? अगर पीएम ना होता तो मैं पोकर प्लेयर होता, प्रोफेशनल पोकर प्लेयर. I love that game. It requires skill, it requires presence of mind, risk taking capability, and decision making skill is also important. So definitely professional poker player. Then I remember one thing now that I'm talking to you कि जब मैं मेरे second company में था, तो when I was trying to convince my boss कि मुझे दूसरे रोल में डाल दो, तो he suggested a business role to me, and the rationale he gave was very interesting. So he told me, because you are a very good poker player, that's why I think you can do this. So yeah, poker. So one pro poker tip. One pro poker tip is basically trust your instinct. One movie you love to watch again and again. I love one movie that I watch repeatedly is Zindagi Na Milegi Dobara, and the vibe, the way the movie is presented, and the things that were shown. I also want to do those things, and I get happiness if I watch that movie. If I'm sad or if I'm somewhere, I'm feeling like I have to pass time, I watch that movie. And one more movie which I like is Moneyball. I think that is also a very good movie. Awesome. And one product leader you follow? I definitely used to follow Steve Jobs back in his days, but right now I think Satya Nadella is one of a very good product leader, and I watch his videos. I read whatever he posts. I follow him. I mean, he's a great leader, I think. I second that. And one book you really love and you want to suggest to all the product managers? I recently read Atomic Habits, and I think some way or the other it has helped me improve personally, and I would recommend, if you have time and if you want to spend time, read and implement whatever is said in that book in your life. Amazing. That's a rapid fire time. I believe I had a lot of fun listening to your answers, and you might get something, you never know. I did fairly well. You did fairly well. Check your inbox
after the call, you might have something. There are a lot of people who involve in our life, and because of them, who we are. So, is there anyone you want to say thank you for your career? So yeah, I mean, if I have to say thank you, then definitely my family and friends to set the foundation and giving me that exposure which I got during my early days. And I think I was lucky enough. I came from wherever I came from, and after that, I would definitely like to thank my managers, my colleagues, and a few close friends in the companies where I worked for their guidance and support. And it has helped me a lot. Whenever I reach out to anybody without any questions asked, I get their help and I get their suggestion. So the relationship that I have built is, I think, that has helped me, and I want to say thank you to everybody. If anybody wants to reach out to you, how they can reach out to you? So my LinkedIn profile is the best way to reach out to me, and I will ask Himanshu to tag that in his YouTube video. And in my LinkedIn profile, you want to book one-on-one sessions with me. There is a link where you can go and book sessions from there as well, and I will respond promptly there. So, all of you who are listening to Pratik want to figure out more beyond this knowledgeable session, that how you can become a better product manager, how you can get a job in Zomato, how Zomato is growing. And if you want to know anything else in general or specific to a food tech, just reach out to Pratik. Pratik, I had the most amazing time today. It was really, really fun and an enjoyable day for me. Same here, Himanshu. I think it was a lovely experience for me as well. And your questions were too intimidating and tough, but yeah, I think I did good. No, they were not intimidating. I didn't ask your salary, man. Apart from salary, also there are intimidating questions that you were asking about Zomato, right? I think you were an amazing guest. I really loved it. Loved my time today. Thank you for Yes. thank you for joining us. And And for all, wherever you start your own channel or own book or own cohort, hire me as a teacher. for sure, if someday that is happening, you will be there. It will happen. You're so confident. I'm so happy about it. We'll definitely work towards the community and helping the PMs to become a better folks, better PMs. So, guys, if you're watching this, do hit subscribe, like, and comment. This might reach to someone who is looking to get into this role, or you will be able to get them the exposure which they don't have till now. Just share this video with one more person, and your job will be done. Thank you so much for watching this. See you soon. Bye bye.